Assalamu alaikum guys, it is your own Dr. Hassan Shafiq back with another new video for you guys. It's been a while, but I'm here back again and I'm here to tell you about the latest news which is going around the dental world right now, and one of the most promising news related to regenerative dental technologies and regenerative dental tissue is coming from South Korea. Seoul National University of Dental Sciences, in which the scientists and the students and the teachers are doing some great work on the teeth. They have made something like microneedles in which they can regrow your tissue, your enamel, and it is very bioavailable. It means there's no rejection because it is your own tissue. And guys, this is so promising that I think it will be a great competition for the Japanese TRG35 regenerative injection. So guys, don't wait anymore. I will tell you in detail about this new procedure. Okay, so guys, you have to understand that this technology comes from South Korea, from the National University in which they teach dental sciences, and they were telling to in their press conferences many things which I heard about. So this is like a microneedle patch. They have made a microneedle patch in which this patch can be given near the gums for 20 minutes. If your tooth is broken in the front, they will give exactly on the bottom of the tooth on your gums for 20 minutes this microneedle this patch which releases tight glucose medicine. Guys, the tight glucose is again in the competition. Tight glucose medicine is given for 20 minutes daily, and they have seen that they have regrown teeth, chipped teeth, in maybe like 3 to 4 weeks, and they have grown resolved tissues, cavities in 6 weeks. I mean, this is great, and they have done the human trials. They are ready to go, and I will tell you more about this after a break. Okay guys, I was reading that this patch delivers a drug named tiglosave. As you know guys, tiglosave, many people are very interested in this kind of drug. Via patient's painless needle applied to the gums. I mean, if the front of, for example, let's take an example. If the central tooth in front of your mouth is broken, this microneedle patch will be given in the gums underneath your broken tooth for 20 minutes daily. So what will happen? Small cavities will heal in 4 to 6 weeks, and a chipped tooth, a broken tooth, or a shaved tooth enamel will regrow in 8 weeks. I mean, if you see all my old videos, people are always asking me, sir, is there anything for the chipped tooth or the broken tooth or the shaved tooth? Guys, this is here. This tight glosive patch, microneedle patch, is helping to regrow your enamel. And it's a very groundbreaking technology, and I'm so much impressed. No drilling, no filling, low pain, regenerative tissue with low rejection, because this is your own tissue which will regrow. And I think it will give a great competition to Japanese TRG35 injection once again. And it is very cost managed product. It will be very cheap, not very expensive, and it will be available for everybody. And South Korean people government is planning to make it easy for people who want to come to South Korea and get this treatment, and they are helping for dental tourism. If you want to come here, they will give you an hotel. You will get the procedure done, and you can go back. I mean, it's well done. These guys, South Koreans, are going beyond my expectations. So you can also read it on Seoul National University School of Dentistry on their website. It's available everywhere, and I'm very impressed with it. Hats off to these people. Great thumbs up for getting this kind of technology for humanity. And once I will share a new information about TRG from Japan also. Okay guys, there is also another news which I want to share. Is there was another news from Torigen Biopharma that FDA from America, US Food and Drug Administration, has sent an email to the Torigen Biopharma people from Japan that they want to meet them and they want to discuss about this drug, about TRG35 injection, and they want to help and understand this development of this antibody drug
and its promotion and its availability in the international market. Guys, things are hyping up. They are going to US, and US people are very much interested in this. So it's a very good news. I will tell in detail in the next vlog about this. And now for my Indian followers and my Asian followers, अस्सलाम वालेकुम once again. यार आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है गाइस, एक नई चीज़ आई है साउथ कोरिया से, टाइट ग्लूसिव वाली माइक्रो नीडल आई है. अगर आपका ये वाला दांत या ये वाला दांत टूट गया है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो पैच है, नीडल वाला पैच, ये यहाँ पे लगेगा. इधर जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, अगर मेरा ये दांत टूटा है इसके नीचे यहाँ पे लगेगा. और माइक्रो नीडल पैच अगर आपके दांत के नीचे लग गया, हर दिन 20 मिनट के लिए आप लगाएंगे और 4 से 6 हफ्ते में आपका कैविटी ठीक हो जाएगी. और अगर आपका दांत टूटा हुआ है, साइड से चिप है या आपका ग्राइंड हो गया, जैसे 1000 लोग मुझे इंडिया से, मलेशिया से, मुख्तलिफ जगहों से लिखते हैं, बांग्लादेश से कि सर हमारा दांत ग्राइंड कर दिया हमारे डेंटिस्ट ने, अब कुछ हो सकता है? तो यस, अब हो सकता है. इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. और ये रीजनरेट करता है इनेमल, और ये उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स भी इसके कर लिए हैं और 30% लोगों में नए दांत उगने की एक्टिवेशन भी हुई है इसकी वजह से. और इन्होंने खामोशी से लगे रहे हैं और ये सारा कुछ वो करते गए, और उन्होंने अब जाके सब दुनिया को अपनी वेबसाइट पे एक्सप्लेन किया कि हम क्या कर रहे हैं. अच्छा, वो वंस अगेन बैक. सो गाइस, उन्होंने ये सारा प्रोसीजर करते रहे हैं और ट्रायल्स भी करते रहे हैं और उनके ट्रायल सक्सेसफुल हैं. और उन्होंने कहा कि 30% लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, और उन 30% में जहाँ पे उनके दांत निकले हुए थे वहाँ पे टूथ रीजनरेशन वाला बड है वो भी रिएक्टिव हुआ है. और मुझे तो लगता है ये बहुत सख्त मुकाबला होगा TRG-35 इंजेक्शन जो जापान का है और इनका, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट पैरेलल है. और सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने, साउथ कोरिया ने, उनकी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया है डेंटल टूरिज्म का. वो कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आएँ, हम आपको इजी वीज़ा देंगे, आप इधर स्टे करें, ये ट्रीटमेंट करवाएं और इसके बाद आप वापस भी जा सकते हैं. मतलब जिस तरह टर्की में वीनियर्स होते हैं, पूरी दुनिया टर्की जाती है दांत लगवाने के लिए, वीनियर्स लगवाने के लिए. तो डेंटल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और हुकूमत भी उनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये हमने जो प्रोसीजर बनाया ये बहुत इफेक्टिव है और इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट भी होगी. मतलब कि ये बहुत महंगा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जापानीज इंजेक्शन के. सो गाइज, मैं तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर द फ्यूचर. आपके बारे में क्या ख्याल है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, बताएं. और सी यू वंस अगेन. और एक और न्यूज़ थी कि जो अमेरिका की एसोसिएशन है ड्रग और फूड की, FDA, उसने मीटिंग करने का कहा है टोरिकम बायोफार्मा से कि आप हमें बताएं ये ड्रग कैसी है और आप इसको अमेरिका में कैसे बेच सकते हैं. उसके बारे में डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा. इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट्स में लिखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. वंस अगेन आई विल सी यू वंस अगेन. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.